आवाज़ आ रही है ना शायद। चैट कर लें पापा। तो वेट करता हूँ लोगों का, फिर जो भी किसी के डाउट्स हैं वो ले लेंगे। कैमरा उल्टा क्यों आ रहा है मेरा? ठीक है, तो आई डोंट थिंक कोई लाइव ज्वाइन करने वाला है। फिर भी आई विल गो माई एक्सपीरियंस। तो किसी को भी डाउट है, किसी को फ्यूचर में ICPC आना है, तो मतलब कैसे आ सकते हो तुम लोग? तो इवेंट बेसिकली, सॉरी फॉर दैट। सो इवेंट बेसिकली 2 डेज़ का था, राइट। तो पहले दिन तो लाइक हमारी जो वो होती है, लाइक चेक इन वगैरह होता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह वो हुआ। एंड पहले दिन आपको मतलब वो हाफ एन आवर देंगे, ताकि जो आपका सिस्टम है, जो भी कॉन्टेस्ट इन्वायरमेंट है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो लाइक जो आपका आईडी है वो है कि नहीं है। जैसे आप कंपाइल करते हो, कंपाइल हो रहा है, कोई इशू नहीं है, लाइक माउस ठीक काम कर रहा है, कीबोर्ड ठीक काम कर रहा है, राइट। तो आपको हाफ एन आवर मिलेगा उसके लिए ऑन द फर्स्ट डे। एंड ऑब्वियसली लाइक फर्स्ट डे पे आप क्या ट्राई कर सकते हो, फर्स्ट डे पे आप चेक कर लो आपका आईडी सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, लाइक इंटरनेट ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा है मशीन पे, माउस एंड कीबोर्ड जो कि लाइक बहुत ही बेसिक थिंग्स हैं। सेकंड ऑफ ऑल जो कंपाइलर है वो ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा है। एंड लाइक जो आपका एनवायरनमेंट है, लाइक जिस पर कोड करते हो, वो आप सेटअप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो आधे घंटे में आप ये सब चेक कर सकते हो। तो वहाँ पे एक लाइक कॉन्टेस्ट भी होता है, आधे घंटे में दे विल गिव यू अ प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट, सो यू कैन सबमिट योर प्रॉब्लम्स देयर। एंड अगर कोई इशू आता है तो तभी की तभी जो वहाँ पे कोई भी होगा, RCD वगैरह होगा, उसको इन्फॉर्म करो एंड दे विल फिक्स इट फॉर यू, राइट। तो ऑन द फर्स्ट डे ऐसा कुछ खास होता नहीं है, आपकी लाइक नॉर्मल जो आपकी लाइक इंट्रोडक्शन वगैरह है, आपका सेशन होगा नॉर्मल। आपको इंट्रोड्यूस करेंगे लाइक हाउ डू यू हैव टू कम, लाइक हमें पहले दिन शर्ट्स दे दी गई थी, so you had to wear the shirts to the contest on the second day, right? So the main part is the second day आपको like हाफ एन आवर पहले पहुंचना है जो भी वेन्यू है आपकी। like अगर कॉन्टेस्ट अराउंड 10 बजे शुरू हो रहा है, so you have to reach the venue at 9:30। and like आप कुछ कैरी नहीं कर सकते, you don't have to carry anything, they will give you water and everything, you just have to carry like your ID card and that's it, no watches, no phones, like you don't have to carry anything, right, extra। so contest obviously 5 hours का होगा। and the very important thing is
राइट, क्योंकि कॉन्टेस्ट में अगर आपको अच्छा करना है तो ऑब्वियसली जो आपकी इंडिविजुअल स्किल है वो मैटर करती है, राइट। सो इट रियली मैटर्स हाउ यू आर, लाइक ये मैटर नहीं करता कि पहले कौन कोड कर रहा है। इफ यू आर एमिंग फॉर द टॉप 3 स्पॉट्स, आई थिंक देन ओनली इट मैटर्स। बट अगर आप इंडिविजुअली काफ़ी अच्छे हो तो देन यू कैन कैरी योर टीम लाइक इंडिविजुअली। सो जो बच्चे बोलते हैं यू नीड टू लाइक आपको कॉन्टेस्ट देने साथ में, वो मैटर नहीं करता आई थिंक। बिकॉज अगर आप लाइक 6 to 7 प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, यू वुड हैव बीन इजीली इन द टॉप 10। and I think first 4 problems were really easy. We solved first 4 problems in like the first hour, and अगले 4 घंटे में हमसे कुछ नहीं बना। तो like अगर आप individually काफ़ी strong हो, like in the next 4 hours you can solve 2 to 3 problems on your own, and your team will be in the top 10, right? So like teamwork matter करता है if you want to be in the top 3, but if you are aiming for top 10 or top 20, then you need to be individually strong. कॉन्टेस्ट 5 आवर्स का होता है, एंड आई डोंट थिंक कोड बुक इतना मैटर करती है। लाइक फॉर अस, हमने कोड बुक से इतनी हेल्प नहीं ली। एंड जो कोड बुक है मैंने देखा था, लाइक वट यू कैन डू इज यू कैन, जो आपकी कोड बुक है उसको लैंडस्केप में करो प्रिंट, राइट। लाइक डिवाइड योर कोड बुक, जो आपकी A4 शीट है उसको लैंडस्केप में 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लो, एंड जो आपका कोड है उसको 2 साइड प्रिंट कर लो, राइट। एंड जो लाइन स्पेसिंग वो कम से कम रखो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेंट आ पाए आपकी कोड बुक में। So these were some tips, and I like वहाँ जाके तो आपकी आई थिंक टीम वर्क इतना मैटर नहीं करता। इंडिविजुअली आप कितने अच्छे हो वो मतलब ज़्यादा मैटर करता है ICPC में, आई थिंक। या सो दोज आर द बेसिक थिंग्स, और इतना कुछ आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग मोर। या किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क योर डाउट्स अबाउट द ICPC। आई डोंट सी एनीथिंग इन द चैट, या मेरी चैट स्टक हो गई है फॉर सम रीजन आई थिंक। Yeah, I don't see anything in the chat. और ये कल लाइक ये स्ट्रीम कल होनी थी, बट कल मेरे को टाइम नहीं मिला, तो इसलिए स्ट्रीम आज कर रहा हूँ मैं। हाउ कैन आई स्टार्ट फॉर ICPC? आई थिंक द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आप अपने कॉलेज में पहले लाइक अप्रोच करो कि आप ICPC के लिए जा सकते हो नहीं जा सकते, क्योंकि लाइक कुछ कॉलेजेस हैं लाइक जो लाइक जिनके जो टीचर्स हैं वो अवेयर ही नहीं है। क्योंकि अगर आपको ICPC में जाना है, यू नीड अ कोच, एंड जो कोच है वो सिर्फ कोई कॉलेज का लाइक जो टीचर है वही हो सकता है। तो पहले किसी टीचर को अप्रोच करो कि जो आपका कोच बनने के लिए तैयार हो, उनसे उनकी ईमेल आईडी वगैरह मांग लो कि हमको उनको बताओ हमको ICPC के लिए जाना है, एंड वो आपके लिए साइन अप करेंगे ICPC की साइट पे, तो ही आप जा पाओगे, राइट। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि जो टीचर है आप पहले उनको मनाओ, क्योंकि अगर आप साइन अप ही नहीं कर पाओगे तो तैयारी करने का कोई पॉइंट नहीं है। सबसे पहली बात है टीचर मनाओ, एंड एटलीस्ट उनको 1 मंथ पहले इन्फॉर्म कर दो कि 1 मंथ में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी होता है ना लाइक जो टाइम विंडो है साइन अप की वो अराउंड 1 वीक की होती है। तो हो सकता है आप टीचर को इन्फॉर्म करो कि स्टार्ट हो गई है, एंड 1 वीक तक वो रिस्पॉन्ड ना करें, एंड फिर विंडो क्लोज हो जाए। तो ट्राई करो एटलीस्ट उनको 1 मंथ पहले बता दो कि लाइक आने वाला ICPC, ताकि वो आपके लिए साइन अप कर पाए, राइट। सो दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू गाइस नीड टू लाइक सी अबाउट ICPC, राइट। क्योंकि इस बार मेरे साथ यही हुआ था, जो हमारा लाइक जो हमारा कोच था, उसने बहुत ही लेट लाइक किया साइन अप, तो हम सिर्फ एक साइट जा पाए। वी कुड नॉट साइन अप फॉर अमृतापुरी, एंड वी कुड नॉट साइन अप फॉर कानपुर, क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज अपने कोच को पहले इन्फॉर्म करो दैट वी नीड टू साइन अप फॉर ICPC, दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग इज लुक फॉर अ गुड टीम। आपके कॉलेज में जो भी मतलब टॉप कोडर्स हैं, लाइक उनको अप्रोच करो, उनको बताओ क्या होता है ICPC, बिकॉज इफ यू वांट टू गो टू ICPC यू नीड अ गुड टीम ऑब्वियसली। So try to approach some guys in your college, and the third thing is practice. आपको खुद पर करनी पड़ेगी practice if you want to like go to ICPC. You need to be like really good at your college level as well. So try करो, जो भी कॉलेज में आपके अच्छे कोर्स हैं उनको अप्रोच करो, खुद भी काफ़ी प्रैक्टिस करो, and I think it is not that hard to go to regionals, right? You can easily go to regionals. So I don't think that is a worry, because I think some teams went to regionals at around 500 rank, राइट। सो 500 रैंक बिल्कुल हार्ड नहीं होता आना मतलब रीजनल्स में, इफ़ यू आर लाइक अगर आप आराम से करोगे क्वेश्चंस विदाउट एनी लाइक रॉन्ग सबमिशंस, यू कैन इजीली रीच द रीजनल्स, बिकॉज 500 रैंक इज रियली इजी इन रीजनल। आई डोंट थिंक इट इज दैट हार्ड टू गेट 500 रैंक। Yeah, the main thing is making it to Asia West. You need to be really good if you want to make it to like Asia West.
You need to be in the top 5 or top 7 or something like that if you want to make it to Asia regionals. And if you want to go to world finals, obviously you need to be the top one team, right? So you can easily go for regionals. So your first thing that you should aim for should be regionals, and the second thing that you can aim for is top 10 or top 20 in the regionals, right? That is a really good standing, I would say. Any other doubts? I also met some guys, like some of you guys were also at Gwalior. This code was enough for ICPC. I'm able to solve two problem of div 2 at present. I think you need to solve at least three or four problems in div 2. Yeah, and I think code forces is more than enough. Like if you do good at code forces, you should be able to do good at ICPC. Yeah. So try to solve at least three to four problems, and the second thing, try to find good teammates. Right. That is very first point. Yeah. So I was saying I also met some of you guys. I think I met two or three guys at ICPC, and like जो मेरे को देखते थे, so I felt really good that I am having like some kind of impact at least. Yeah. So we only have two guys in the chat. So let's see if some people are coming in. At least, or we will end the streams. Yeah. So anybody who's joining in late, I'm taking doubts about ICPC, and if you guys want some tips, right, about ICPC, so you can leave your doubts in the chat, and I'll be more than happy to answer them. What a topic that I need to learn to solve div2C. I think trees and graphs and binary search is more than enough. Yeah, you need to be good at binary search. I think because most of div2Cs are either ad hoc, greedy, or binary search, and sometimes about trees. Really, yeah, and also some math theory. Yeah, so you need to be good at ad hoc, number theory, and binary search mostly, and I think that will be enough for div2Cs. लॉजिक बिल्ड नहीं होता भैया. लॉजिक्स आई थिंक इट कम्स विद प्रैक्टिस ब्रो. लाइक कोई भी लाइक खा के पैदा नहीं होता है. हर एक को हैवी करता है प्रैक्टिस एंड दे लर्न. कुछ लोग होता है वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कुछ लोग बहुत स्लोली सीखते हैं. वो सबके साथ होता है वो होता है ना. लाइक हर एक की अपनी अपनी वो होती है, कैपेसिटी होती है. कुछ लोग बहुत स्पीड से सीख लेते हैं, कुछ लोग बहुत स्लोली स्लोली सीखते हैं. अगर आप बहुत स्पीड से सीख रहे थे तो आप लाइक हो सकता है 3 प्रॉब्लम में सीख जाओ. जो स्लो सीखता है वो हो सकता है वो 30 प्रॉब्लम में सीखे. तो यू नीड टू सी वेयर यू स्टैंड. अगर आप स्लो सीख रहे हो तो ट्राई करो, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करो. राइट. एंड दैट इज द थिंग. बिकॉज सीख तो हर कोई जाता है, राइट. अगर आप स्लो सीखते हो तो ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो. एंड जो फास्ट सीखते हैं वो कम ही सीख लेते हैं, राइट. सो यू नीड टू इंक्रीज योर फ्रीक्वेंसी, योर हार्ड टू मैच दोस हु आर बेटर देन यू, राइट. एंड ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट ICPC, राइट. बिकॉज ये क्वेश्चन तो बहुत लाइक ऑब्वियस क्वेश्चंस हैं. Try to ask something that you guys don't know about ICPC or something that you guys are confused about. Because I think many people, बहुत लोग हैं जो जाना चाहते हैं ICPC में but जा नहीं पाते हैं. Wait a second.
Yeah. सो और इसे कोई डाउट है कुछ आईसीपीसी के बारे में? क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम था ऑन साइट रीजनल्स, सो इट वाज आल्सो न्यू फॉर मी, ऑल आई आल्सो लर्न सम थिंग्स। पहली बात तो हमारी कोड बुक बहुत ही गंदी थी। सेकंड थिंग, वी वर आउट ऑफ प्रैक्टिस, हमने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी। लाइक आई गेव माय कॉन्टेस्ट आफ्टर एन ईयर, राइट? सो आई थिंक दैट वाज अ बैड थिंग एज वेल। आपने जनरल करे थे ना आईसीपीसी के लिए? फॉर मी अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट क्वालिफाई दिस टाइम। सैड रचित। No, I think you will have another chance, Rachit. I am also in fourth year, so there will be one more regional. Yeah, it will be in January. You are in fourth year now, right? Yeah, so you will get one more chance. It will be in like there will be registrations in December, and there will be ICPC 2022 in January. ICPC के लिए general topics. Yeah, I think you need to have some good knowledge about like maths and binary search, etc. to solve some basic problems in ICPC. And I think some, because we solved four problems this year in the regionals, and the fifth problem was about graphs. Like it was not really about graphs; it was like like mostly ad hoc, but still. One was a really good math theory problem. It was about GCD. That was really good. Like I said, bro, going to regional is not hard if you have a good team and you guys do some practice. It is really easy to go to regionals, especially Amritapuri, because there are lots of seats in Amritapuri. If you have around 500 rank, you can easily go to Amritapuri. Yeah, it's not that hard. Obviously, you should try to get a better rank, but around 500 ish rank is enough for regionals. And that's assuming you are the top team in your college. If you're the second team in your college, like forget about regionals, I would say, because we are the top team in our college, so that's why we are able to qualify every time. I have been to regional two times. This was my first on-site regionals. Last year it was online regionals, and we were really bad in that one also. Regionals are like quite hard because on site you cannot use anything. You don't have your own, you don't have your own computer, you cannot search anything, right? So it adds some pressure as well. You need to be like really ready for that kind of environment if you want to do good in regionals. So I would recommend, like, if you're trying to like get ready for regionals, try to code on notepad, right? And try to not search for anything on Google, right? And I think that will help for the regionals, because when you go to regionals, like, it is really hard when you cannot search anything, and there are like a lot of teams near you. You are three guys, and also one more thing, when you're trying to solve problems in the regionals, don't share your approach with your teammates, right? Because if you share your approach with your teammates, they will try to approach the problem like with the same approach, and it sometimes like you get stuck at a problem, right? So if you're trying to solve a problem and you are not able to solve it, tell your teammate to solve it, but do not share your approach, right? Because if you share your approach, he will approach that problem with the same approach, right? And sometimes you get stuck. For example, in the graph thing, I had a wrong approach. I shared that approach with my teammate, and he also tried to do the same thing, right? And in the end, we were not able to solve the problem. So if you are not able to solve some problem, share it with your teammate, but do not give him the approach. Let him approach in a brand new way. So maybe he will find something that is more beneficial. But if you share your approach with somebody, they will try to think in the same manner, right? And I think it sometimes hinders, and you get stuck at a problem for that reason only. So do share problems, but do not share the approach. I think that is a very important thing.
Learners, how can I get 400 rating? The practice, bro. That is the only thing. Like people ask, how do I reach expert? The only answer is practice. Always upsolve, practice, and that is it. Obviously you need to learn topics, but if you upsolve you will automatically learn topics, right? Because I never sat down and learned segmentary. I was solving a problem, I was not able to solve it, I looked at the tutorial, it told I need segmentary, and I then read about segmentary, right? So always try to upsolve and you will always learn new topics if you upsolve. And please keep the questions about ICPC because this stream is only for that. Please don't ask some general questions because that is not the idea for this stream. I'm pretty is there any good set of questions that I can solve. You can try to upsolve all the contests from code forces. Like try to give virtual contests as much as you can. Next ICP selection month kya hai? It will be near January, like near the year end or in the next year January, right? So like keep an eye out for that. For each specialist with div to C, bro. I got placed at MathWorks thanks to CP videos. Now to motivation to CP to please motivate. Why should I do it even after placement? Uh, uh, why should I do it after placement? I don't know, bro. Like to land a better company, I think, because I'm also placed and I also find it hard to do CP. I only do CP to make videos. Next year, yeah, bro. Because SSV due to COVID, there was a like 1 year of ICPC got skipped, right? So now they will take two ICPC in a single year to make up for that. Because currently the ICPC was for the last year, right? The ICPC that we just had was for the last year, and the ICPC for this year will be in the January. So they are compensating for the 1 year loss that we had due to the pandemic. Yeah. The motivation is always intrinsic. Yeah. To become specialist, I think doing div to C's are enough. If you're able to solve div to C, you will easily reach specialist, I think. Let's get some doubts. By A B हो जाता है C के लिए. Bro, how is A2O ladder? I think A2O ladder is really old now. You should not solve that anymore. I think just doing virtual contests is enough, learners. Or you can try to solve. There's one thing called, I don't know the name.